And the further you walk down that road, the more of yourself you'll find. And then I heard that once you start finding yourself, it's easier, to get things done. And once you start getting things done, well then that's your story. That's what your life revolves around. And the more I think about this, the less sense it makes to me. Because I know that my story starts way before I think about it. I know that my journey is more important than just getting things done. And more importantly, I know that even accomplishing something alone doesn't matter, unless I have something to believe in. Something that I believe in so much that I don't fit everywhere. And that is how I feel about art. मैं मुंबई शहर की एक ऐसे कोने से आता हूँ, तो शहर में होकर भी इतना अलग है कि ऐसा लगता है कि मेरा मोहल्ला कभी मेरे शहर की माशूका है। एक बार इसे छोड़ दिया फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कभी। मैंने जिंदगी में हर तरीके की गरीबी देखी है और उसके परिणाम भी। वड़ा पाव पर पूरे दिन गुजारे और पार्ले जी और पानी पर रातें गुजारी। मुझे लगता है कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन ये भी लगता है कि मेरी किस्मत जो है बहुत अच्छा हैंड वॉश है, तो हाथ में मेरे पैसे लगने ही नहीं दिए। तो इसलिए ना बहुत बार हाथ गंदे भी किए पैसे कमाने के चक्कर, लेकिन जिंदगी में तो थप्पड़ लगाया और फिर अच्छा सबक सिखाया। लेकिन कहते हैं ना, एक को ना जिंदगी और किस्मत को लेकर मेरे दिल में बहुत कीचड़ थी, लेकिन कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो वहीं खिला एक रैंडम इंटरनेट कैफे में बैठ के मैं रैंडमली बस बहुत सारे ट्रेलर देख रहा था हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज की। तो एक वीडियो पे गलती से क्लिक हो गया और वो वीडियो एक अफ्रीकन अमेरिकन रैपर का था जिसका नाम है राकिब, और वो गाना था द 18th लेटर। तो मेरे को इतनी इंग्लिश समझ में तो आती नहीं थी, लेकिन वो एकदम कुछ बहुत बिल्ला राइम कर रहा है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन अचानक में एक लाइन आई जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लाइन लगी उस गाने की। वो बोलता है कि सम ऑफ माय रैप पैटर्न स्टिल सराउंड सैटर्न। तो मेरे को हमेशा से ये सिखाया गया कि आप जहाँ से आते हो ना, तो आप कुछ नहीं बन पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा यार ये बंदा धरती पर है और वो अपने रैप पैटर्न सैटर्न के अराउंड कर रहा है, तो ये तो कितनी बढ़िया चीज है। मतलब पन्ने पर ये करना पॉसिबल है। तो मेरे को लगा भाई अब तो मैं भी पन्ने पर हर चीज लिख कर पॉसिबल कर दूंगा। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने पहाड़ हिला दिया तो आप नहीं मानोगे, लेकिन अगर मैं लिख दूं कि मैंने पहाड़ हिला दिया तो आप यकीनन मान जाओगे। और मैंने वही किया। मेरे को लगता था कि मेरी जिंदगी है ना, वो एक स्फीयर है जिसमें सिर्फ बस अंधेरा है। लेकिन जब से पोइट्री मिली तो लगा कि नहीं यार, स्फीयर नहीं है, टनल है, इसके एंड में एक रोशनी है और वही रोशनी पोइट्री है। So if you ask me, on a very deep personal level, I believe that the most important thing this universe can give us and or will ever give us is art. The creation of it, the expression of it, and most importantly, the consequence of it is both life-saving and lethal at the same time. And all art is made up of stories. Just like any other being, just like me, just like you guys. Stories come from ideas. And ideas come from all our past experiences. So let me tell you some of mine. I was an angry and really anxious 6th grader at my annual family vacation. Now back then I didn't know what anxiety meant. All I knew that it made me really, really uncomfortable. So my option back then was to hide in the washroom until my annual left. That night, I opened my phone, opened my notes app, and started throwing words on there. This wasn't my first time writing. It was my first time writing poetry, and oh my god. I was so excited when my paragraphs started turning into verses. So I completely forgot what I was angry about. And that's the cool thing. My writing didn't end there. In 10th grade, one of my seniors took me to this event called a poetry slam.
it just hit me really hard because the moment I saw that stage, I knew that I fit there. I knew that I fit there as well as the last piece in any jigsaw puzzle. Another year later, I finally found the courage and I did my first performance. And it was surreal. Because seeing people, take space for themselves is one thing. But letting myself forget all my ambitions and tell the entire world, which in that moment was just 40 people, exactly what I was thinking, was heaven-like. And of course I was scared. But the 5 minutes that it took to make me feel like I had finally found myself was worth everything. And I had a lot of beautiful people at that event that night. I didn't realize that one of them was going to become my co-founder. जैसे कि मैंने बताया, मैंने पोएट्री लिखना शुरू करी और फिर जब भी उदास होता दिल को या कोई भी तरीके की ठेस पहुंचती तो एक पन्ना लेता और रैंडमली स्क्रिबल करना शुरू कर देता जितनी राइम्स मुझे आती थी। और उसके बाद यही हुआ कि यही करता रहा, पता नहीं कि क्या करना है, बस ये पता था कि यही करना है। तो एक दिन इंस्टाग्राम के बारे में पता चला और फिर वहाँ देखा कि और भी पोएट्स जो हैं अपनी पोएट्री वहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं, तो मैंने भी अपनी पोएट्री वहीं पे पब्लिश करना शुरू करी और इसी तरह से मेरी और पोएट्स से दोस्ती हुई। फिर उन्होंने मुझे बताया ओपन माइक के कॉन्सेप्ट के बारे में, जहाँ पर कोई भी बंदा या बंदी स्टेज पर चढ़कर 5 मिनट के लिए अपने दिल की सारी बात कह सकते हैं, बस एक ही शर्त किया कि उसके पैसे लगते थे। और मेरे को सुनकर तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको अपनी बकेट लिस्ट में डाल दिया और भूल गया कि घर पे तो बकेट के भी बांधते हैं। तो पहली बार जब मैंने किसी ओपन माइक में परफॉर्म किया ना, तो मेरा एक दोस्त था नीरज, उसने उस ओपन माइक की जो फीस थी वो मुझे ऐसा बर्थडे गिफ्ट दी। तो आज मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ, आप ये समझ लो कि मुझे वो बर्थडे में मिला है। और वो पहली बार स्टेज पर चढ़ा, इतना मचाया, कैसा लगा था कि मैं दुनिया का ना जो आखिरी और पहली बार ना लोग मुझे मेरे शब्दों से जज कर रहे थे, मेरे कपड़ों से नहीं। किसी को ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, वो सिर्फ ये सुन रहे थे कि मैं क्या कह रहा हूँ और उनके लिए सिर्फ वही इम्पोर्टेंट था। तो फिर से माइंड में ये बात मान ली कि भैया तो यही करना है, मगर ये नहीं पता कि कैसे करना है। तो कभी कभी क्या किया कि एक हफ्ता पैदल आ गए, क्या नाम है, तो कभी एक हफ्ता पैदल आ गए हम कॉलेज से पैसे बचा लिए बस के, और कभी कभी कुछ किताबें भेज दी ओपन माइक में जाने के लिए, और कभी कभी तो अम्मी के पर्स में से पैसे भी चोरी कर लिए और ये नहीं सोचा कि यार ये पैसे अब्बू शाम के खाने के लिए दे के गए थे। मैं अपना दिल की भूख तो भर रहा था, लेकिन मेरा परिवार जो है वो भूखा था। और एक दिन फिर यही हुआ कि एक ओपन माइक के बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे देखा जिसकी एंट्री फीस 150 रुपए थी। तो मैंने यार सोचा यार अब तो पैसे है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है, सिर्फ वेन्यू तक बस से पहुंचने के पैसे थे, लेकिन उसके अंदर की एंट्री फीस के पैसे नहीं थे। तो सोचा अम्मी से पैसे चुरा लूं, लेकिन इस बार जब अम्मी का पर्स खोला तो लगा कि जिंदगी में फिर से एक तमाचा लगा दिया। और फिर उसने बोला यार तू अपने दिल की भूख मिटा रहा है लेकिन परिवार को भूखा रखता है, और ये बहुत गलत बात है। और मुझे लगा यार ये किसी को भी क्यों करना चाहिए, किसी को भी अपना दिल भरने के लिए अपना पेट क्यों खाली करना चाहिए। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि जहां हम आपके से पैसे ना ले, देखने वालों से ही ले लें। तो फिर ये बंदा जिसे जूतों की लेसेस नहीं बांधने आती, वो दुनिया को चलना सिखाने निकल गया, और उसी से स्किल पोएट्री की शुरुआत है। So when Daniel came to me with the idea for Spill, it was a no-brainer. I was aboard. Because the intention was just so pure, the want and just the need to give spaces to artists for free. That's all we wanted to do. But the thing was, back then we didn't have the funds, but that was the entire point, to still do it. So we did. We used our pocket money to fund whatever we needed. I borrowed a couch, I borrowed pillows and carpets from my grandmother. We got chai and biscuits, and we just hoped that people would show up. And they did.
and we just listened to each other's poems for 3 hours. That was the first open mic, funded by our passions and our pocket monies. And then we got the confidence to do one more event, and then one more event. And then we even had the confidence to start a YouTube channel, and that really changed things for us. It really put us front and center. I won't go too much into detail, but we do have a really shiny, really beautiful golden button hanging on our wall back home. Poetry had made us feel like we really belonged. And we wanted to make other people feel that as much as we could. In the past 6 years, poetry has changed for us. People all across the world are accepting poetry. They're coming up on stages. People are creating communities. And not just publicly, even in our personal life, the way we look at art has changed so much. For example, मेरे को ये ना एक टाइम पे लगा कि मेरे को सबसे अच्छी कविताएं लिखनी है। मेरे को ऐसी कविताएं लिखनी है जिनमें कोई भी गलती निकाल ना पाए, जो बहुत क्राफ्टी हों, जो काफी कॉम्प्लेक्स हों, और जिनके लाइन पर चुटकियां हो जाएं, तालियां हो जाएं, और फिर मतलब स्टैंडिंग ओवेशन ही मिल जाए मुझे, और लोग मुझसे कहें यार तू तो गुलजार जैसे लिखता है, तू तो जावेद अख्तर साहब जैसे लिखता है, सारे लोग जानेंगे कि भी थोड़ी थोड़ी बातें हैं तुझमें। तो इसी सेल्फ प्रेशर के चक्कर में मैं लिखना ही भूल गया, और फिर मैंने कई महीनों तक कोई कविता नहीं लिखी, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, जिंदगी के तो तमाशे लगाए, फिर से सिखाया भैया तुम इतने दिनों से कविताएं नहीं लिख पा रहे हो, वो इसलिए है कि क्योंकि तुम जो है गुलजार जैसे, जावेद अख्तर जैसे, साहिब लुधियानवी जैसी कविताएं लिखना चाहते हो, तुम अपने जैसी कविताएं लिखना नहीं चाहते हो। तो तब से मैंने मकसद जिंदगी में बना लिया कि मुझे अपने जैसी कविताएं लिखनी है, और वही कविताएं इंपॉर्टेंट होती है। असली कविता वो होती है जिसे आप लिखने से पहले जीते हो, है ना। कविताओं का सच्चा होना जरूरी है, उनका अच्छा होना जरूरी नहीं है, और कविताओं को लिखकर मिटाना जरूरी नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ लिखा जाना जरूरी है। तो क्या ये समझा? And I agree, being true to your art is so much more important than focusing on making it great. Being an artist is really complicated, I'm not gonna lie. It's not like a two-sided coin, it's like a 12-sided, really irritating Rubik's Cube. But that's also one of the best parts. Let me give you an example. When I first started writing, I only looked at everything through one lens: money. My wins, my losses, my struggles, everything was just from one perspective. But the more I saw people perform on stage, the more I saw the impact art had on people, it really defined a sense of purpose within me. That art cannot exist alone. Constantly seeing people throw their entire lives in front of a mic, giving so much context into their lives, makes us feel like we know everything, right? Like we've seen it all. But the harsh reality is that we haven't. And I don't think we'll ever be able to, and that's just something that we have to accept and be okay with. I say we, not just me and Daaniyal, but the millions of people who have been on this journey with us. Because just like art, artists cannot exist alone. We're all creatures of community. And although creating this community has been the biggest thing we've done, we've also had a share of ups and downs. स्पिल पोइट्री ना एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म भी है, और इंटरनेट पर ट्रेंड्स और फीचर इतनी जल्दी चेंज होते हैं, इतनी जल्दी अक्षय कुमार की नई फिल्म आ जाती है। तो स्पिल पोइट्री को ऑनलाइन अपलोड करना कोई आसान बात नहीं थी, स्पेशली जब आर्ट कंटेंट बनते जा रहा है और आर्टिस्ट को कंटेंट क्रिएटर्स बनने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा देश, हमने भी इंटरनेट के साथ वैसे ही एडजस्ट किया जैसे अरेंज मैरिज में मियां बीवी एक दूसरे के साथ। और एक चीज जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की उम्मीद देती है वो ये है कि स्पिल पोइट्री का ओरिजिनल आइडिया, स्पिल कॉमा पोइट्री, लिटरली हमें लगता है कि किसी को भी किसी भी वजह से किसी भी आर्ट फॉर्म करने से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि यार मैं ठीक से नहीं करूंगा, मैं बराबर नहीं करूंगा, या मेरा आर्ट इम्पोर्टेंट नहीं है।
भाई ऑयल स्पिल जो है खतरनाक होता है दुनिया के लिए, आर्ट स्पिल नहीं होता, इसलिए स्पिल योर आर्ट। एंड आज सबको ये बोलना चाहता हूँ कि स्पिल पोइट्री इज नॉट जस्ट वन बिग प्लेटफॉर्म, it's millions and millions of people trying to find their own small stage. Yeah, that's very good. You know, our journey may sound inspiring, and it has taken us a long while to get here. But the past 6 years have made more important for us to see the bigger picture. The thing is, art doesn't belong to the past, or the present, or the future any more than it belongs to us. Poetry exists to break free, sometimes even literally. You know, Percy Shelley once said that poets are the unacknowledged legislators of the world. And it's true. Because I remember sitting in my classroom and reading poems that were written on wars and revolutions. Poems that were written for the people back then. Poems that didn't even know if they were ever going to be read or not. But I still sat there, reading them. And deep down I knew that they belonged. And that's all any of us need to know about art. The fact that it can be so personal to the creator, yet still manage to be universal. That's what art has for us. We want to represent everybody. No matter if they write in a small notebook or they perform in front of thousands of people. Whether they think that art fits or not. चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं, किसी भी रेस, रिलीजन और जेंडर से आए, हमको फर्क नहीं पड़ता। हर वो इंसान जो स्टेज पर चढ़कर जब तक हारता है तब तक वो जीतता नहीं, वो स्पिल पोइट्री को रिप्रेजेंट करता है, और ये इम्पोर्टेंट है। और हमें लगता है कि हम हमेशा रेवोल्यूशन की बड़ाई की बात करते हैं, कितना बड़ा होता है रेवोल्यूशन और कितने लोगों का दिल बदल देता है, लेकिन रेवोल्यूशन खत्म तो होता है बहुत सारे दिल बदलने से, लेकिन वो उसकी शुरुआत होती है एक दिल बदलने से, और वो एक दिल आर्ट की वजह से बदलता है। तो हमें लगता है कि ऑल आर्टिस्ट आर रेवोल्यूशनरीज एंड ऑल आर्ट इज रेवोल्यूशन। Our story is one of every artist that is meant to be and will be. Because there are millions of wars and revolutions just waiting to happen. And there are thousands of people ready to pick up